हेलो दोस्तों, मैं आज ये रेगुलेटर चेंज करने वाला हूँ जो बोर्ड में लगा हुआ था। ये इसका नोब टूट गया है, इसे हम रिप्लेस करके नया रेगुलेटर इसमें बदलेंगे। पहले हम बोर्ड को खोल लेते हैं। आज मैं सारे कनेक्शन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, कैसे कनेक्शन किया जाता है सब कुछ बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड खुल गया है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वायर हैं, तो हम सिर्फ ये रेगुलेटर का कनेक्शन ही खोल देंगे। ये स्विच पे जो कनेक्शन हुआ है इसे खोल देते हैं पहले। इसे खोलने के बाद जो स्लीप फैन का जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो रेगुलेटर कनेक्शन किया गया है उसे भी हम खोल देते हैं। बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे ये अभी लाइन इसमें अभी चालू है, मतलब नहीं है, लाइट अभी इस बोर्ड में है। इस रेगुलेटर को हम चेंज करेंगे, हम नया वाला इसमें डालेंगे। पहले इसका नटों को खोल देते हैं, दोनों नटों को। इसकी जो अंदर वाले नट जो लगा हुआ है इसको हम बोट प्लायर की मदद से पकड़ के नीचे से मतलब बाहर से हम टेस्टर की मदद से हम खोल देते हैं। अभी इसमें जंग लगा हुआ है, इसीलिए बहुत टाइट लग रहा है, मगर कोई बात नहीं, खुल जाएगा ये। Though I'm so stressed out, everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Kill lies, I'll do what I want. देखिए दोस्तों, ये नट खुल गया है। अब हम रेगुलेटर को निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका नोब टूट गया है, इसे हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम नया रेगुलेटर हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसका पैसा कनेक्शन किया जाएगा और सब कुछ सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। पहले हम दो नटों को हम कस देते हैं, टाइट कर लेते हैं, फिर बाद में कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये दोनों नट जो भी हम टाइट करते हैं ये बराबर से टाइट हो गया है। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। ये इसका लीड वायर है, ये सीलिंग फैन का लीड वायर है। ये रेगुलेटर का जो आउटपुट का वायर है, इसे हम इसमें जोड़ेंगे। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. जोड़ देने के बाद यहाँ पे हम टेप लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, कहीं पे ये जॉइंट टच ना हो। देखिए दोस्तों, ये टेप लग गया है। अब हम इसका जो दूसरा वायर है वो इनपुट का, हम यहाँ पे जो स्विच का वो आउटपुट है वहाँ पे हम ये टाइट कर देंगे। I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit.
देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन रेडी हो गया है। अब हम इस बोर्ड को हम फिट कर देते हैं।